उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। बहस व तकरार की इस वीक की पॉडकास्ट में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे दस्तूर मरियम खान, जो कि इस शो का एसेंशियल पार्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जनाब जीशान फरीद साहब। जीशान फरीद साहब आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जनाब, और जीशान इज एन इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर, और जो है पाकिस्तान के पहले इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इसके अलावा जीशान जो हैं वो एग्रीकल्चर जो है वो पढ़ाते भी हैं। ही डिड हिज एमएस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की फील्ड में पढ़ाते भी हैं। इसके अलावा ये इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ओवरऑल। लेकिन ये इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और हमने सोचा आज इनसे हम बात करते हैं और थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं। तो जीशान, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? वेलकम जीशान। Thank you so much. I'm fine. वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा I'm doing जीशान, great. How about you? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। उम्मीद है आपका रमजान जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे जीशान, Alhamdulillah, going well. I would like to add here, he's a media expert as well as motivational speaker. oh okay, and yeah, that's what I got to know about his profile. Is it right, Zishan? Yeah. Actually, I was a declaimer, English declaimer for my University of Agriculture. I won 27 All Pakistan level debating competition, and I was president of debating society of my university as well. Okay. I was studying agriculture, but I was more interested, in English debating and English speaking and English coaching. So after my graduation, I thought to join this sector. Particularly, I see that many motivational speakers are doing their work in English and in other regional languages. Why not in English? I mean, Pakistanis are, I think, fourth or fifth It's a compulsory language, yes. largest population in the world who know English. So I thought to initiate my work in English in order to have a little soft interaction with outside world, because many of the foreigners that don't understand our language. So if I do my work in English, it will be much better. So we would like to talk. Yes, please, you go ahead. Okay, Zishan, I wanted to ask that हम थोड़ा सा उर्दू और इंग्लिश तरह मिक्स करके बात करते हैं ताकि हमारी ज्यादा ऑडियंस को समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछना एक्चुअली ये चाह रहा था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाउ यू मोटिवेट पीपल? व्हाट इज योर मेथड ऑफ मोटिवेटिंग पीपल, स्पेशली व्हेन your audience cannot, like most of the audience cannot understand English very well, and even then you speak to them in English and you motivate them. How you do it? That's what motivation is called. He motivates. He first teaches them, then he motivates them to speak it. Yes. You see, my main focus is university graduate. Okay. Our graduate, after having CGPA 4/4, 3.9, 3.8, good grades, and when they are coming out of institute, they are searching for job. They are dropping the CVs. They are now getting some suitable career, and even some of the situation which is prevailing in the country. So they are going in destitute. Most educated people, most educated youth of our country, they said, okay, the jobs are no more. They are with the reference. They are with some, authoritatives are getting jobs. So we are from middle class. So we are nothing. We lost. We are so, pessimist. They lose track. They think that our life ended, because we have nothing. At this stage, they need a counseling. Okay, they need a little sympathy. They need a little motivation.
Otherwise it would be a disaster, you know. They start, you know, going for some negative aspects, including for addiction, or including some bad activities, even going for um, some ignominious I activities are understand. there. Yeah. So Yeah. if we at this stage, if we talk to them, okay, you are trying one job, okay, you're not getting that job, try another, try another, try another. If you're trying for more than 10 you know, 10 time, maybe at 11th or at the 12th try, you will get it. And I try to collect some of the reference from different newspapers, different media, different universities, different societies, and I put them with my in my workshops and in my sessions. That you see, let's suppose the girl Azka Khan, she got the job at 8th try. You know, she got the job at 9th try. Okay, and you are just trying once or twice, and you are so destitute. Why don't you try? So at this time, you know, student contact me that, sir, I was more interested in arts, but my father forced me to join sciences, to go in engineering, which is not my passion. So what should I do? I simply try to convince them that quit and join arts. If even if you are an engineer, why don't you go for your passion? Like me, I mean, I studied sciences, but I was more interested in English language and literature. I said, okay, no problem. I have one degree in agriculture. Uh, why don't I should you know, do a master, another master's in That's English, right. and I have But done, and I got the Dishant, master. Yeah, Dishant, I have a question here. Okay, fine. You're saying that it's easy to switch. When you're studying, it's fine that you can switch from one subject to the other. But in the long run, you see, it's not a professional degree. And do you think there's a scope of earning if you are not getting that, you're just having a simple plain masters or simple education like that, which I have also done. But don't you think it's not beneficial? So how do you convince them with that? Because they want an earning hand. That is why they want their children to be some professionals yeah, or something like that. yeah, exactly. There is also a question. Okay, you know, the people from majority of our community, they are from, you can say, a middle class. They can't afford expensive or you know, education system, education That's right. schooling, and after that even universities. Some of the universities which have a lavish you know, fee structure, and um, they got good ranking, but obviously they Sorry to are interrupt. you know, Sorry to interrupt. We are not talking about lavish education or expensive universities right now. They might get an admission in government universities for engineering or for yeah, medicine or yeah, for. I'm just But still, they don't I'm want just to. trying to, The point is that they don't want to. They might yeah, want to yeah, study language, but in the long run, there's no scope in terms of earning. That's what I'm saying. That's another point. A lot of parents want their children to go into professional universities just for the sake of this reason. That's what my point is. You get yeah, me? but yeah, I got your point, but the most you know, most of the parents they force, still they force their children that they should choose professional degree. Okay, let's suppose if I'm interested in fine arts. Okay, but Yeah. if I'll talk to my family, my parents, for example, I have to choose a major, they will say, लो fine arts, उसकी कहाँ पे scope है, उसका कोई हाँ, है नहीं, that's jobs नहीं है, why हाँ, don't you जॉब्स go नहीं है तो for क्या कमाओगे तुम घर में क्या लेके आओगे okay, तुम okay, yeah, this is the point. Okay, now here So you again, it's see not that about a some matter of people, interest. It's about a matter of earning and practical fields and competition at times because your cousins are becoming that, so you also have to yeah, be yeah, like them. this is Or the your case. friends even. I'm Yeah. saying, I'm saying, I am relating my previous command. You know,
if you have a degree from a professional institute, and if on the other hand one student have a degree from private, as a private candidate, he or she appeared in exam and got the masters, okay, simple master, for example, any subject. Yes. Now Yes. the person who got the professional degree is not trying, is trying once, is trying twice, okay, and he or she is believing that the jobs and the career is not for me. I'm not for this career. On the other hand, a simple graduate is trying and trying. He or she is dropping CV. He or she is studying current affairs, studying other competitive exam material, and appearing. And after 1 or 2 or 3 years, we see that he or she is successful in getting a Yes. good job. So there Yeah. it comes, the role of motivation in student life. Okay, unfortunately in our society, if you are graduating from any university or any degree, if you are going to home without job, they will say, "Oh, Lucy By that time, spent there's four no. years, spent 6 years and coming home without job. So it means that he or she was not studying That's there the and ultimate just goal. enjoying." Education is not the Yeah, ultimate goal. Yeah. yeah. So how do you inculcate At that skill in them? That if you are an yeah, educated person, you can make the difference and earn this way or that way. You don't have to yeah, run yeah. after the degree. Yeah. Okay. At this stage, we need to motivate them. Okay, we have another opportunity. Okay, why don't you go for international GRE and go for your master's from a developed country and PhD from developed country, and after that you'll get a good So how much do career. you Why don't you apply motivate to the study? Yeah. students you meet? Yeah. How much do you motivate these intelligent or bright students that you meet to go abroad and study? To have an experience of the prestigious universities around the world. How much do you motivate them for that? Yes. Okay. Okay. Yes, I'm commenting on it. There are a lot of scholarships are available on internet, from lavish kind of scholarship available from developed countries. And even our students don't know that how to apply and where to apply. They are saying, I don't have money, I don't have 1 or 2 million rupees. My parents can't send me to study abroad, so I am disappointed. I'm in a destitute. I have nothing. Even why don't they try to a scholarship which is funded by, for example, European Union? A lot of American scholarships are there, Fulbright, a lot of Commonwealth. Australian, Yeah, there's so Fulbright. many. Yeah, so this is the case. Even I don't know. Even I never qualified international GRE, but I know the ways. I know that how to clear the international GRE because I know I'm an IELTS instructor. I know that if you Yeah, have that's what that IELTS, was about. you apply in some scholarship, they are offering you good education, and if you have a good degree from abroad and you're coming back, you get a good career in a multinational company. So this is the case. My ultimate objective is uh, to save the mind of a fertile student who is masters or MPhil from a university, came back to home and not getting any career, so lost, he or she lost his or her Goes mind. into depression. Yeah. Goes into depression as well. uh, Yes. Depression, yeah, this is the case. And sometime in some cases we see that the burning of their degrees and suicide and some sort of incidents are there. Yes. So There's at so this many stage, news that we've seen. if we convince them, for example, a person who is getting a job and getting a salary of 40,000, okay, is an engineer, 40,000 or 30,000, let's suppose, as compared to a person who is a simple graduate and a master and start initiate
a simple business of snacks, or some sort of Russian salad at the evening, at some good good street or some good market. Just a simple start of own enterprises or own business, like Russian salad, for example. If she's selling Russian salad, for example, I'm just saying, just for example, Yeah, and in 30 discipline. years, from a Russian salad, he or she can earn maybe for more than 70,000 or maybe 80,000, as compared to a person who is going at 9 a.m. to 5 p.m. and getting salary of 40,000. At the But same Zishan, time, they are, yeah. yeah. But So these again, my things, point. these ideas are discouraged in our society. लो जी, आप इतना पढ़ के आप फोटोकॉपी का बिजनेस करोगे, लो ये क्या Shan, बिजनेस हुआ? I agree with you, but there's a point again that you do what you can do, number one, and Yeah, number yeah, two, that even if you're running a food stall, or you are an engineer with getting 40,000 salary, it's only for the okay, beginning. You can be a successful engineer in the long run, and you can be a yeah, successful yeah, entrepreneur in the long run. So I don't think so. It yeah, doesn't make any yeah, sense. People keep on trying things. They're engineer. They're yeah, 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 they have their own shops of selling different products as well. So you can do a lot of things. You just can't complain that maybe you are not that bright enough to get all that money. Maybe you yeah, can say yeah. that as well. So I think One of it's a the, mindset. You yeah, can't say that because he has low self-esteem, that is why he has become a shopkeeper or something. You just can't say yeah, that. yeah. This is a very bad kind of norm which is developed in our society, that we always discourage, and we just tag the business with the personality of a person. Okay, I, I if I like book selling, I could be a bookseller. Okay, I can initiate a bookstore in my colony, in my apartment, or Anyway, anywhere, that's fine. in my residential area. But to tag me that लो जी इतना पढ़ने वाला और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बनता था, आज ये दुकान खोल के बैठा हुआ है. But it's the duty this of a this is not the motivational thing. speaker Yeah, not to listen to yeah. others and to teach This others not this to listen to such things. Ultimately, it's your Yeah, life. Nobody's going to support you anyways. So you just have to yes, be yes, yourself. exactly. Why don't you see that the We have to people who break. were meant to be there were not there at that point of time? That's how you have to. You are a psychologist as well, Zisha. I think Yeah, you have to be. You need to be a this is psychologist as well. I have, yeah, I've gone through some of the trauma in my own life. After the death of my father, I was searching for a job and applying at the different jobs, and ultimately I was being criticized by my friends that you are an MPhil and you're not getting job, it means your MPhil is nothing. So after that I thought that um, the emotional trauma, the emotional disturbance which I faced, I need to abolish this stereotype approach in our society, that if a graduate is not getting job in 1 or 2 years after graduation, don't discourage that guy, that your degrees are fake, you are not good educated. Maybe he or she is trying and not getting. It's not his or her time. Maybe his or her time is coming after 2 years. Okay, so let's wait and give him or her some pace, some time. Right. Okay, yeah, this is the That's right. thing. अच्छा Even the जीशान, parents. Yeah, जीशान एक चीज yes, इसमें ऐड कीजिएगा प्लीज, कि yes. एक डिग्री हासिल करने का पर्पस क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? या दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. ओके, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ तो ये है कि आपने डिग्री सिर्फ इसलिए लेनी है कि आपको जॉब मिल सके. बेस्ट में ऐसा नहीं है, मतलब लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आर देयर. You हमारे you have यहाँ done आप degree ये as well. देखिएगा. आपने डिग्री भी की है ना जिशान? वो डिग्री कौन सी है?
ज़राअत की Okay, डिग्री थी? please. Yeah, I have done BS honors agriculture and MA English language and literature. Yeah. आपने बाहर से भी एक डिग्री की है, लाइक आपने अब्रॉड से भी एक डिग्री की है, आपने मेंशन TESOL. I have done TESOL through online वो तो मैंने भी किया था, program funded. आपके साथ ही Yeah. किया था। आई थॉट इसके अलावा भी आप आपने किया, मे बी तो मुझे वो फिर फॉरेन नहीं, वो अब्रॉड की नहीं है। अब तो मेरी डिग्रियां भी अच्छा, चेक करना शुरू हो गई हैं, लेकिन मेरी डिग्री वो नहीं नहीं ओरिजिनल है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है लोगों को असैसिनेट करने का, सॉरी। ओके अच्छा, ओके लेट्स बैक टू द टॉपिक, ताकि वो हम इसको वो थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर सकें। जी, तो जीशान आप कुछ बता रहे थे। सॉरी आई फॉरगॉट द जी, पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक डिग्री हासिल करने का पर्पस क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हाँ जी, डिग्री हासिल करने का पर्पस ये होना चाहिए कि यू हैव टू बी skillful, okay? For example, if you are doing a degree in food sciences, then after that you are searching jobs. जी मैंने फूड साइंसेस में की है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे जॉब नहीं है, स्कोप नहीं। भाई आपने फूड साइंसेस में किया, व्हाई डोंट यू ओपन योर ओन food shop, okay? Why don't you open your own endeavors, okay? Why don't you open your own some sort of a business, not at a bigger level, maybe at a smaller level, okay? आप मीट क्लीनिंग को स्टार्ट करें, वहां से स्टार्ट करें, आपके पास डिग्री है प्रोफेशनल। अच्छा, सिविल इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल आप, आई एम नॉट कोटिंग एनी डिग्री, ओके, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि उसके बाद आप कह रहे हो ओके जॉब नहीं मेरी। भाई आप स्किलफुल हैं, आप अपनी फर्म स्टार्ट करें, ठीक है? and with the passage of time you will get more and more support and more projects. बट इफ अगर आप स्टार्ट ही ना लें, इनिशिएटिव ही ना लें, और आप ये कह दें कि जी मुझे तो स्टार्ट में ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अब्रॉड में आप देखें, यहाँ तो हम देखते हैं ना, ओके यूर एमफिल, ओके यूर डॉक्टरेट, यू आर मास्टर्स। अब्रॉड में आप देखें कि कितने आपको मास्टर्स मिल जाते हैं, ओके? दे पीपल गेट एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, वो कंपलसरी है सबके लिए, वो करते हैं। उसके बाद दे स्टार्ट देयर वर्क, दे स्टार्ट देयर जॉब। और वो ये नहीं देखते रहते कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब ही मिलनी चाहिए। अब इतने बड़े कंट्रीज हैं, यूरोप है, वेस्ट है, कनाडा है, अमेरिका है, बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया, आई एम न्यूजीलैंड। इन नॉर्थ अमेरिका हाँ, राइट नाउ, और यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब ना होने के बराबर होती है वैसे। बाय द वे, ये लाइक बहुत yes, नेसेसरी जो this is जॉब्स the हैं, point. दोज आर जस्ट Yeah. द गवर्नमेंट जॉब्स। Okay, yeah, same is the case. So high school के बाद they start their searching for job maybe, और अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है तो वो भी हाई स्कूल के बाद कर लेते हैं। हमारे यहाँ यू सी एक दफा एक फॉरनर आए, वो हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हमने उनको तारफ कराया कि दिस इज आवर फ्रेंड, ही इज डूइंग PhD, and this is our friend, he's also doing a PhD, this is our friend, she's also doing a PhD. So foreigner कहता, oh PhD, wow, I mean amazing, you guys a lot of PhDs, everybody's PhD. I said कि आप तो एक डेवलप कंट्री से आए हैं, वहाँ तो बहुत ज्यादा PhD होंगे। वो कहते PhD तो भाई वो लोग करते हैं जिन्होंने रिसर्च में, एजुकेशन में बहुत आगे जाना हो। हमारे यहाँ तो बस ठीक है, आपने एक डिप्लोमा किया है, स्कूलिंग ली है, उसके बाद भाई आप अपना काम करते हैं। तो सिर्फ डिग्रीज की बात वो जैसे आपने की कि सिर्फ डिग्रीज जो हैं वो हमारे यहाँ जॉब्स के लिए की जा रही हैं कि जॉब मिल जाए, कि 40-50,000 की स्किल के लिए नहीं की जा रही कि मतलब आप करें और उसके बाद उसको फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके इंग्लिश में आप एमफिल हैं, आप फोटोकॉपी शॉप का बिजनेस क्यों नहीं करते? मतलब फॉर एग्जांपल इफ योर कजन इज नॉट गेटिंग द जॉब, फोटोकॉपी का एक बिजनेस, फोटोकॉपी शॉप क्यों नहीं खोलता? वो ये नहीं इसलिए नहीं खोलता कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, तो मैं अगर फोटोकॉपी की शॉप खोलूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे? तो वी हैव टू ब्रेक दिस लेकिन जीशान, अब देखें, अगर किसी ने स्टीरियोटाइप। या इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर्स किया हुआ है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, नॉट ओनली फोटोकॉपी शॉप।
आप I'm just ट्रांसलेशन का काम putting कर for सकते example. हैं, आप Yes, यानी देयर yes, आर टन्स ऑफ थिंग्स आउट देयर। आप फाइवर पे जाएं, आप sir. 10,000 किस्म की चीजें, Wow. देयर आर मेनी थिंग्स Yes, राइट। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग वो की कमी है ना, यू हैव ट्रेनिंग टू की बी कमी, या ट्रेनिंग की एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग के एक जैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो एग्जैक्ट कि इस तरह की चीजों को ट्रेन करें लोगों को कि भाई आप इस तरफ भी आ सकते हैं। डोंट फील ट्यूटोरिएटेड और डोंट फील फिनिश्ड कि जी ये नहीं हुआ तो ये, तो ये यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू शुड ट्राई देम, यू शुड गो फॉर देम। तो आप ओके जैसे सर, लोग हैं one yeah, one more question from you. कि if you are studying in, for example, in North American, any country in North America, okay, वहाँ पे स्कूलों में कॉलेजेस में हमने ये सुना है, हमारे दोस्त हमारे जो रिलेटिव्स है वो बताते हैं कि एक दिन सेशन होता है जिसमें एक सक्सेसफुल पर्सन को या एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाता है और सबको कहा जाता है कि उस दिन आप उसको सुने। वो सिंपली आपको बताता है डिफरेंट एग्जाम्पल से और उसके बाद अपनी वो स्टोरी, इवन इफ यू आर फाउंडर ऑफ लेट्स सपोज मल्टी बिलियन फूड चेन, तो उसको भी बुलाया जाएगा आपके स्कूल में और वो आपको एक सेशन दे देगा और उस सेशन के जरिए आप में थोड़ा सा वो होगा, अर्ज पैदा होगी, यू विल सी कि ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो व्हाई you नॉट will मी। be able to find ये out चीज where do you want to see yourself in future, यानी या what profession तो you want to यहाँ identify। पे मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं, पाकिस्तान में भी तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा ऊपर गए हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं उनको उनका एक लेक्चर रखते, once in a month or maybe once in 6 months। ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सब लोग, स्टाफ भी बैठा हो, स्टूडेंट भी बैठे हो और इस तरह के सेशन होने चाहिए। बस यहाँ इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है, जिशान मोटिवेशन ये नहीं बात है जो है ना, और इस ये जिल को मोटिवेशन नहीं को हमें आपको बतानी चाहिए क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं। ना जिल यूनिवर्सिटी टीचर है लेकिन ना मैं लेकिन यूनिवर्सिटी लेकिन टीचर, तो लेकिन आप लेकिन बताइए। मरियम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। आप इनको ब्लेम इसलिए नहीं, ये ठीक है, ही कैन यस डू इट ऑन हिज ओन, यू कैन नॉट ब्लेम हिम बिकॉज देयर इज एन एजुकेशन सिस्टम, ही ऑन हैज टू इट। गो यस जस्ट विद यस यस एजुकेशन यस सिस्टम। यस तो ये बात अपनी जगह। अच्छा जिशान, एक चीज और बताएं, आजकल वो कहते हैं ना, इट चुको तो मोटिवेशनल स्पीकर निकलता, तो हर बंदा कहता है कि मैं मोटिवेशनल ऐसे स्पीकर। That's the reason I asked you the ऐसे ही है। question in the beginning कि आपके ख्याल में मोटिवेशनल यानी हाउ यू मोटिवेट पीपल, क्योंकि आजकल हम 8-10 जो ठीक है हमारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कासिम अली शाह साहब हो गए, वो एक डॉक्टर साहब हैं, वो एक कैसर समथिंग है, तो यानी देयर आर लाइक टन्स आउट देयर, और हर बंदा समझता है कि ओके बस वो बोलेगा और दुनिया सुनेगी। तो लेकिन हम किसी किस्म की हम बाजू का, तो बल्कि मुझे ये लगता है कि हमारे मजहबी स्कॉलर ज्यादा हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट, वी ब्रिंग रिलीजन एंड एवरीथिंग एज वेल। या तो या इन या इस एग्जैक्टली। सिनेरियो में व्हाट डू यू थिंक, हाउ, यानी इसके लिए भी कोई लाइसेंसिंग होनी चाहिए या हर बंदा उठ के कह दिया मैं तेन मोटिवेट करा? Yes, this is a very, very important, point. Exactly. You see, when I started it's not a career, it's a passion. Okay, my passion as a motivational speaker. सबने ये कहा कि भाई इंग्लिश क्यों झाड़ रहे हो, इंग्लिश में ही बात करनी है। मैंने कहा यार, आई विल बी इन इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत ज़्यादा है उर्दू में, पंजाबी में और भी रीजनल लैंग्वेजेस में मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत मिल जाएंगे। मेरा जो मेन फोकस है वो मेरे एजुकेटेड यूथ है और इंटरेक्शन विद फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन पीपल, और उनको बताना है कि वी पीपल, वी आर आल्सो गुड थिंकर। Even I'm admin of several WhatsApp groups in which we have people from many countries, almost every continent country student is present there. Even I was teaching to the African online, teaching English language, and I was getting some of the money as well. I was also teaching in Gulf as well. um, ये क्या है कि जब इंटरेक्शन हुई है तो उन्होंने कहा, मतलब फॉर एग्जांपल a lady from Peru said, पाकिस्तान में भी इंग्लिश बोली जाती है। I said, हमारा तो सारा स्ट्रक्चर ही इंग्लिश का है
और हम कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये हम ये सोचते हैं कि उनका जो सिलेबस है वो आज से कोई 200 साल पीछे है, या वो लोग इतना होंगे, उनका कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा आपको क्या पता है, आपको ये पता ही नहीं कि सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट मतलब पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है वो हमारे यहाँ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ओके एग्जैक्टली। ओके, मैंने उसको कुछ ना कुछ बताया, तो इंटरेक्शन हुई है। और थोड़ी पॉजिटिविटी, मतलब मेरी तरफ से अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी अबाउट माय कंट्री is generated in the mind of people who are abroad, I think it's my service to my country. Okay, if I'm not getting anything, okay, मैं वो आपने बात की ना कि यहाँ पे ब्रांड बन गए हैं, ये जी ब्रांड है, वो मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो 3 लाख 4 लाख लेगा फॉर वन सेशन। ओके, इट मीन्स कि उसने और वो वही कोटिंग कर रहा है, एग्जांपल इधर उधर की लगा के, ये ठीक है, you know, he or she is taking as a professional or as a um, it's okay, it's fine, but my मैं job वैसे is I'm अजराहे basically मजाक एक बात आपको बोलूं सर, अभी आप जी अगर जी गूगल करें ना टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हाँ खादिम जी, हुसैन रिजवी की भी तस्वीर आती है। right, so you see, we have some of the sensitivity about speaking on religion. Okay, so motivational speaker जो अच्छा एक motivational speaker है वो तो is not touching the religious things. Okay, he's always quoting the general examples, although कि हमें इन चीजों के ऊपर भी बोलना चाहिए. I agree with your point and I know that we have to speak, but there are a lot of things are there. As you are free, we are not I free. agree, we can just skip the topic, we can just move on, it's okay. Okay, okay, but It's easy for me I'm to talk about it, not for you, I understand that. yeah, but we have to inculcate slowly but gradually in our society that this thing is not good. For example, I'm just saying that people are more crazy to marry in their caste. Okay, they said नहीं जी, caste तो बाहर ते जाना ही नहीं, no no, caste के अंदर ही शादी होनी चाहिए. ओ भाई क्या हो गया यार, मतलब this is 2021 Well, he and you are, recently got married. yeah, He okay. recently got I'm not talking married. about So Congrats, myself, but congrats. I'm well, overall. congratulate. I'm Okay, congratulating him, but I was telling you that he was complaining that okay, Okay, his freedom okay, it's and okay. okay, Let's move okay. on. yeah, Let's move, Yeah. please. So it has affected we his have freedom. to break this stereotype approach as well. That if you have a educated and a good family, good community there, why don't you go for marriage? Okay. Why this Jat, Gujar, Rajput, and everything is there? Okay. It's okay. It's fine. Okay. It's good to be in your community and in your caste. But if you have some option and you see some good option, why don't you go? Even in your country, you see the people will be not thinking about even nationality, that वो बंदा ओमान से आया है या कोई जॉर्डन से है, या is from Pakistan or Bangladesh. Okay, he or she is good and we have some good attachment. Okay, let's go for it. Yeah, you can consider that we should be from same religion or same culture, but it's not necessary कि अगर आगे भी आप nationality में भी आगे आप search करते जाएं. So this thing we also think as a nation. Okay, we have to think as a nation. Okay, we have some responsibilities. Now we are Pakistani. We have a unique identity, and we have to build our country. We have to work for our country. वो बात करते हैं जी फलां ने क्या कर दिया, फलां नया आएगा तो ये क्या कर देगा, वो भाई कोई आसमान से तो नहीं आएगा ना, हम में से ही होंगे, It's more हमने about ही a करना. mindset. It's more about a social mindset. अच्छा या जीशान, मैं या आखिरी एग्जैक्टली. क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कि हमारा टाइम तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे ये बताइए ओके, कि हम इस सोशल माइंडसेट को, इन योर ओपिनियन, क्योंकि मे बी यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट बिग ऑफ अ लेवल, लेकिन स्टिल आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, स्टिल बहुत बड़ी ऑडियंस, अभी आपने या खुद बताया या कि आपके पास एजुकेटेड इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, लोकल भी है. यस. मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ी ऑडियंस कह रहा हूँ कि शायद आपके पास उतनी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट इन दोस टॉप 10 स्पीकर्स, लेकिन यू आर स्टिल माशाल्लाह हैव अ वेरी गुड ऑडियंस एंड वेरी बिग ऑडियंस. तो मुझे या ये बताएं कि I am like आपके ख्याल में. sorry, जी जी. I just want to mention that I am like
the dancer behind the heroes. Okay, some people are dancing behind the main heroes. in So in we are in, in my strugglers. opinion, I'm a struggler. in my opinion, in my opinion, I think you guys are reaching more audience, so you guys are the main heroes. Yeah, That's my yeah, opinion. yeah. Those who Okay, are thank you. those who are actually talking to the actual grassroots kind of like people जो Yes, basic yes, मैसेज yes, से बात कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से they are the real heroes, जिन्होंने yes, 3 लाख yes, 5 लाख 10 लाख exactly. रुपया लेके ट्रेनिंग देनी है. They are just No, talking to some no. specific Uh, people and they are not delivering Specific their people, yeah. message. Actually, they're just talking about what organization wants them to talk. I was in the same Yeah, profession, so that's why I know how the business works. So मुझे अंदाजा है. लेकिन मेरा ख्याल से you guys are doing the real job in my opinion. और yes, मेरा ख्याल से yes, आपको ज्यादा masses के बारे में या जो actual issues उनके बारे में मालूम है. तो yes, yes, exactly. मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, ये माइंडसेट्स कैसे चेंज होंगे? व्हाट आर यू गाइस डूइंग अबाउट इट, स्पेशली टीचर्स, क्योंकि मेरे ख्याल से टीचर्स आर द रियल मेंटोर्स और योर फर्स्ट मेंटोर्स आर टीचर्स. जिस तरह से स्कूल्स में मरियम शुड एग्री टू मी कि मैं ये देखता हूँ जो टीचर्स प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं, वहां से आपका एक्चुअल माइंडसेट बनना शुरू होता है. तो Okay, you're right. हम उन टीचर्स को अहमियत नहीं देते. आपने वेस्ट को देखा हुआ है. आप इमरान खान जितना तो वेस्ट को नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप वेस्ट को जानते हैं कि Yeah, वेस्ट में जो अहमियत दी जाती है वो मिडिल स्कूल तक के जो टीचर्स हैं या हाई स्कूल के टीचर्स हैं उनको बहुत अहमियत दी yes, जाती है. क्यों? क्योंकि दे आर जी जी, बिल्डिंग द ब्रेन्स. जबकि अगर हम yes, देखते हैं कि हमारे यहाँ, अच्छा आप यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, आपके सामने सब सजदारेज हो जाएंगे, और जो बेचारा स्कूल का टीचर है उसको कहेंगे चल तू तो मास्टर है. ठीक है, तो ऐसा ये ही, वाला, तो ये ऐसे ही. माइंडसेट्स आप लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू मासेस. अभी आपने बड़ा अच्छी बात की, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है. इफ यू वांट टू बिकम अ प्लम्बर, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम कि आप प्लम्बर बन रहे Yeah, हैं, हम no, उसको no problem, no आउटकास्ट कर problem देते at हैं. all. तो हाउ आर यू चेंजिंग द माइंडसेट? Yeah, changing the mindset is really a big job, the main job, or a formidable task, you can say. Uh, but it won't be in a 1 year, in a 10 year, in a 5 year. It's a continued process. Okay. All we need is to, as a teacher, as a trainer, as a motivational speaker, I need to put my efforts to the area of my influence. Okay, if I'm influencing on 10 people, 10 students of master's level, okay, if I have inculcated some of the positivity in their mind, they are going to the society, they are going to their home, and they are getting married, they're having some of the impact, and after 10 or 20 years or 30 years, maybe we'll see the impact, the real impact. But as a motivational speaker, if we just say कि भाई कोई मेरी तो बात सुनता ही नहीं है, यहाँ तो कुछ हर कोई है, यहाँ पे हम ऐसे भी मैसेजेस आपने देखे होंगे कि आ रहे हैं कि आजकल किसी से बहस ना करो, अगर कोई हाथी को कह दे उड़ता हुआ है तो भाई उसे कह दो उड़ता ही है हाथी. तो मतलब ये क्या है, मतलब यू हैव टू कंटिन्यू योर एफर्ट. आप अपनी एफर्ट तो जारी रखो, आप उसको ये ना कहो कि हाथी उड़ता है, उसे कहो भाई हाथी नहीं उड़ता, ये आपको गलत फहमी है, आप मानो या ना मानो, लेकिन यू हैव टू चेंज योर माइंड, यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर. तो अपनी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल कल ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जो एक मैसेज दिया, एट सम हिली एरियाज, वो the garbages are इट्स there, एन और अमेजिंग वो वन. यस. people are, yeah, amazing one. अच्छा वायरल हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा ना. शायद 10 के 20 के माइंड में ही अगर वो रह जाए बात कि एक एम्बेसडर ने ऐसा किया, तो हम ये जो रैपर फेंक रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे जाके डस्टबिन में फेंक दें, तो ये भी एक चेंज है. मतलब ये भी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइक अ चेंज. सो इस तरह की effort we have to continue. And if Mariam is a teacher, okay, at maybe I don't know the level of student she's teaching, but she has some influence on the student, okay, and she's inculcating some of the positivity in the mind of student. This is real service I would of like to our say to the here, country. uh, Yeah. Zishan, it's not only a teacher, then it's also the influence of your family. If I try to Yes. inculcate something, I'm not complaining against anyone, but Okay. what about those people who see the dustbin, still they throw the paper outside it?
no matter what, because and it's their ego that don't you dare stop me. I don't know what kind of Yeah, attitude is yeah. this and who is inculcating Okay, it, because no teacher guides you to do such thing, even it's Mariam or okay. anyone else. Nobody Yeah, is guiding yeah, us. Then who do you yeah, see? Then of course it's your family. There's something going on in there. You see how your elders do it. I don't want to I mean criticize any specific person. Then why that garbage is not going into the bin to other places? yeah, So yeah, at this point, I just stay confused, and it's okay. Then let it go. What can you yeah, do? yeah. How about Yeah, putting a fine and this is putting a fine on that that uh, dustbin or any place like that. That if you'll throw it yeah, outside, you'll have a fine. You know, who is responsible for that. So again, it is yeah, government's yeah. responsibility to sort these things as well. How No, not at how all. far Okay. and how much we can get. Yeah. Right. You see, when we go to the fruit, for example, somebody is selling fruits in your street, and we ask some, यार कितने में दिया, तो वो कहता है जी इतने में दिया. ओके, इतना ज्यादा क्यों हो गया महंगाई? लो जी, सब चीजें वो है, वो ऊपर से आ रही हैं, तो ये मतलब ऊपर से क्या इतना ही आ रहा है कि आप जो है वो 100 रुपए किलो कर दें, जो चीज है ही 50 की. ठीक है, ऊपर से आपको प्रेशर आया है या को टैक्स ज्यादा हुआ है, तो 60 की कर दो भाई, 70 की कर दो, 100 की क्यों कर दी है? अच्छा, ब्लेम कर दिया जी उसको. हमने खुद नहीं चेंज होना. हमने लट्सो जी ले, ये तब्दीली है, ये फलां है, उनको कर दिया, आपने वोट दिया फलां. ओ भाई, ठीक है, लेकिन आप उसको चेक करें कि क्या आप पे इतना टैक्स लग गया कि आपने उसको इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि उसको आपने डबल ही कर दिया. यू नो, दिस इज द थिंग, एज मेंशन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता. यू हैव टू बी योर ओन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहाँ पे एक और भी टेस्टमनी है, एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, वट एवर वी आर, कि हम देख रहे हैं सोसाइटी तो नहीं चेंज हो रही और बात भी नहीं मान रहे, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी we shouldn't stop doing our effort. Okay, हमें फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है, नहीं कर रहे, हमने पेरेंट्स को भी बताया कि your children are not taking interest and they are just video games that I they think play all the time. जिशान, हम अपनी कम्युनिटी में, मैं अपने अपने बात करूंगी जहां आई एम वर्किंग इन आई we are quite successful in changing the mindsets, and parents, their children, my students, they are very much cooperating, they listen and they change. Yeah, yeah, And I'm sure if other peoples do the same, overall we can yes, change as an. So I yeah, mean, I am yeah, satisfied with my people, but in general people are not. yeah. It's a big nation, a huge population. I think fourth largest populated country of the world. So, but we need to change the mindset of the people in our influence. Okay, the whole city of Sahiwal is not in my influence, but some of the people are in my influence. I need to change them, and some of the people from other cities are in my influence, so I have to change them, their thinking, and Few maybe interesting they will facts change. about Yeah, Sahiwal, because my relatives live there. I already mentioned to you. There are only rickshaws in yeah, that city. There are no cabs. Is it true? and I It's less polluted. now we People have still. cabs, but at that time we don't have. We have I dairy visited there products. last We time have in agriculture. 2007, 6, 7. Yeah, we are an agricultural city. Okay, we have dairy products, and we have uh, mostly Yeah, dealing I with know a lot about agriculture. the city. Yes, I know a lot about the city. Yes, Sahiwal. Yeah. चलिए इंशाल्लाह ताला अब हमारा क्योंकि प्रोग्राम जो उसका टाइम खासा जो है वो हो चुका है, तकरीबन इख्तिताम की तरफ है. थैंक यू सो मच जीशान, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने ख्यालात को शेयर किया. और आज हम अपने ऑडियंस को ये भी बताते चला, हम जीशान से एक दफा दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि ही Yeah, इज sure. Why टीचिंग not? एग्रीकल्चर, और हम इनसे एग्रीकल्चर पे बात करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि Yes, yes, मैं ये समझता हूं कि ये एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. दे he actually influence people how to choose their career. तो इस yes, point yes. of view पे I think we will request him to come and talk about
द करियर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ Yes, एग्रीकल्चर this को is करियर very नहीं important. बनाया जाता। Yeah, yes. This is, और and you हम एक see, ज़रई मुल्क हैं। जी जी, प्लीज जीशान कुछ कहना चाह रहे हैं? yeah, you see, you have experience of, North American countries, and you see there many of the educated people, even some lawyers, some business graduates, they have their own farms. और बहुत एग्जैक्टली पढ़े लिखे जो है वो 3 और 4 हेक्टेयर्स का फार्म मैनेज कर रहे हैं, यूथ यंग पीपल वहाँ एग्जैक्टली पे लीज पे लेके और वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपकी अपनी जमीनें भी हैं, सब कुछ भी है, और आपने पढ़ाई भी कर ली है, उसके बाद आप जमीन पे काम करना नहीं पसंद करते। अभी कहते हैं कि मुझे वाइट कॉलर जॉब चाहिए। मैं एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर जो मोर देन 70% GDP है, और आपके सारे जो कंट्री के सिलसिलाकार है उसको चला रहा है, उस पे आप यू आर नॉट making you are not deciding to एग्जैक्टली। work on agriculture, और आप हालांकि जो इट है कैन बी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि आजकल तो exactly एक एक exactly कनाल के ऊपर पीपल कैन ग्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो यानी आप बहुत lot कुछ of कर things, सकते हैं, नो yeah. डाउट अबाउट इट। और हमारे यहाँ Hydro, बहुत सी yes, लैंड, yes, और जीशान से हम इस पे भी बात करेंगे क्योंकि आजकल बैरियर टाउन का इशू खासा चल रहा है, तो हम सोसाइटीज बनाते जा रहे हैं ज़रई जमीनों पे, उसका हम क्या करें। right, तो मैं इंशाल्लाह ताला, मैं और yes. मरियम आपसे दोबारा कोऑर्डिनेट करेंगे एंड वी विल ब्रिंग यू इन जस्ट ऑन दैट टॉपिक स्पेसिफिकली, कि हमारे वजीर आजम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बात करते हैं, ज़राअत के ऊपर कोई इंसेंटिव इस तरह का नहीं आया एंड ऑल दैट, तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। और इसके साथ हम अपने तमाम देखने सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। वी ट्राई टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी थैंक्स टू जीशान फरीद एंड मरियम खान, जिन्होंने, मरियम ने क्योंकि मुझे जीशान से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात से इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।